Hi guys, hello and welcome to the 12th episode of Inspiring Small Businesses. आज की हमारी स्पेशल गेस्ट है ईशा शाह वोरा, फाउंडर ऑफ मईशा बाय ईशा. Thank you so much for having me. I was really excited to do this and I'm glad that I'm here. I have a small business homegrown brand called Myeisha and we are basically into lifestyle products. We make bags which are completely out of hand-woven fabrics. So you can say that our entire collection comes out of cottons and burlaps, and there's a lot of weave and handcrafted magic that goes into making our products. That's about it. तो आपको ये बिजनेस का आइडिया कैसे, लाइक देयर इज समथिंग, एक आइडिएशन होता है, एक कन्वर्सेशन होती है जिससे लगता है कि यार इस चीज में एंटर करना है, इस चीज को टाइप करना है या फिर ये मेरा पैशन है. तो आपकी वो बैकग्राउंड मोमेंट या स्टोरी क्या थी? I was pursuing my chartered accountancy and I've been somebody who loves accounts and I love maths and I love studying. When I started interning, मुझे नहीं लगा कि this is something that I will do for the rest of my life. मेरे को हमेशा से I wanted to get into textiles and fashion and all of that. Never really got an opportunity क्योंकि मैं अलग ही zone में चली गई थी. But then we're so rich in art, heritage, I would say even the textile, that I feel that कई बार वो खो जाता है, मतलब we are not making enough use of it. The idea is I wanted to promote this industry that we have and I wanted people to shift from I wouldn't say that our products are completely eco-friendly, but we are getting there. So kind of the idea is also to kind of promote sustainability and eco-friendly products, but the major purpose is always to kind of promote the textile industry and the textile heritage that we have in our country. Alright, तो ये तो आपने आइडिएशन बताया कि चलो आपका लाइक जो थॉट प्रोसेस पे इसके पीछे ये था कि ये चीज करनी है. जब एक बार डिसाइड कर लिया तो फिर नेक्स्ट फ्यू स्टेप्स कैसे डिसाइड किया और एग्जीक्यूट किया, क्रैक किया? So there's an interesting story to that as well. Just start kiya, I was basically into customized gifts. Like, there's a birthday party and I want to make 50 pieces. And I'm like, okay, I will get this done for you. So initially, hum log tie and dye khud karte the and then we used to make bags out of it. Now, after that, what happened was it gave me confidence that this is something that people really like. So let me try and make products so that people can just buy them off the shelf. मतलब वो हमारे, I did not have a studio or anything. I used to work in an office at that time, like on a retail basis, on a B2C basis. So that's when I thought that okay, let me make about 50 to 100 pouches. I was thinking of starting with pouches, and I was like, okay, I'll make these pouches, and then I'll see response kaisa hai, because I'm somebody who's very conservative when it comes to taking risks. So at that time, my husband and I were doing this business together. And I went to my father and I told him that, this is what I'm thinking and this is the idea. And he smirked at me and he's like, listen, I am giving you an order of 505 pieces. You make them for me. And if you don't believe in yourself, I believe in you. So you make those pieces. I'm telling you कि वो सारे के सारे लोग लेंगे. If they don't buy, I'm your customer and I'm going to pay you each and every penny to whatever this products costed you. So kind of his belief in me helped me scale a path. And post that, what we have been doing is we have different scales of businesses where हम लोगों ने अलग-अलग channels को focus किया है. Our major base was always exhibitions. First exhibition in 2018. So that marked the beginning of the brand. We did that exhibition. Then we started focusing on developing our website. Then we started focusing on having our products at different stores across India because उस वक्त domestic was the focus. Then also thought of getting into गिफ्टिंग रिक्वायरमेंट्स. तो आपने जैसे बताया कि पहले एग्जीबिशन से स्टार्ट किया चीजें, एंड इट्स अ ग्रेट प्लेस कि जहाँ पे लोग जाके चेक करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं प्रोडक्ट्स को, एंड आपके प्रोडक्ट लाइक बैग को देख भी रहे हैं, टच एंड फील कर रहे हैं. बट फिर आपने जैसे बोला कि आपने वेबसाइट बनाई, तो वो जर्नी जो हुई कि एक ऑफलाइन या एक फिजिकल स्टोर से एक बी टेम्पररी, क्योंकि एग्जीबिशन को मैं टेम्पररी स्टोर बोलूंगा, बट वहां से फिर आप ऑनलाइन लेके गए. तो एक तो कि क्या थॉट था कि ऑनलाइन ले जाना चाहिए, लाइक नीड पार्ट ऑफ इट, एंड सेकंड कि फिर आपको प्रेजेंट करना कस्टमर्स के सामने, बी इट करंट कस्टमर्स और बी इट पोटेंशियल कस्टमर्स. राइट. तो वो जर्नी के बारे में आप प्लीज बताइए. तो वो जर्नी काफी लंबी थी. आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपकी प्रोडक्ट में, तभी जाके आप एक विजन देख पाओगे कि ठीक है, आई कैन टेक दिस बिजनेस और आई कैन टेक दिस ब्रांड टू दिस लेवल. ओके, दैट डज नॉट कम फ्रॉम डे वन. दैट कम्स फ्रॉम that comes from customer experience and that comes from a lot of feedback also ki matlab like you very rightly said that when we did our exhibition, our first exhibition was like an eye opener for us because we were not prepared. हमें पता नहीं था कि exhibitions में कैसे क्या
कैसे लेके जाते हैं चीजें. हम लोग ऐसे वो बोरे में बैग्स लेके गए थे बिकॉज हमें पता ही नहीं था कि कैसे पैक करके लेके जाना है चीजें. राइट. We were not prepared, extremely anxious because first time था हमारा. हम लोग इतने prepared नहीं थे कि मेरा production ready नहीं था. जिस दिन exhibition था उस 4 बजे तक the bags were not ready. I remember my helper, he was coming directly from my production place, carrying like a few bags on one hand and few bags on other hand. And before he could get to the stall, all the bags were sold. मतलब the response was incredible. मतलब इतनी भीड़ थी हम लोगों के स्टॉल पे कि मतलब I literally, there were 3 days, the exhibition was happening for 3 days and I literally cried all 3 days because मुझे realize ही नहीं हो रहा था कि actually reality है and people are liking the product so much. So that kind of gave me a lot of confidence that कुछ something right that we are doing. And उसके बाद the journey kind of, we took one step and we started developing. तो उसके बाद 1.5 year we were completely offline only. On social media we have been immensely, I would say we have been aggressive in a good way. Right from the start हम लोग we've been taking orders and doing business via Instagram only. So initially when not have anything, the website or anything, हम लोग Instagram के through ही business करते थे. In I think 2020 we had our own studio. So that was one part. Now came COVID. And we were like, okay, now what do we do? Because हम लोग launch करने वाले थे website, उसी महीने में lockdown announce हो गया. So we were contemplating, my father and I and my husband, all 3 of us were discussing कि क्या करना है. I'm like, what should we do? So we launched the website in May 2020. जो होगा देखा जाएगा. Whoever asks me कि how has the journey been, I always say for me, for Maisha, COVID has always been as a blessing in disguise. मतलब उसके बाद things changed drastically. मतलब हम लोगों ने जैसे website launch किया, our whole focus from offline business went towards online business. पहले हमारा 90% business was done offline. Now 80% business हमारा online है. We have a website and most of our orders are fulfilled online. एक और चीज पूछना था कि जैसे आपने बताया कि ऑनलाइन जाने के बाद आपका स्केल बढ़ गया, तो farthest from your office डेस्टिनेशन, सबसे दूर से कहाँ से ऑर्डर आया आपको? मतलब So I remember, ऐसा एक इंस्टेंस नहीं बता पाऊंगी मैं आपको, लेकिन if I had to put it in a way, there was one order that we had received from a very unknown small remote town in Arunachal Pradesh, and to ship that order nobody was taking it. The only people was India Post. तो हम लोगों ने वो पोस्ट से उनको भेजा. So ऐसा इंस्टेंसेस काफी बार हुए वेयर इन द नॉर्थ लद्दाख के भी आगे कोई छोटा सा गांव है, वहां से ऑर्डर आया हुआ है. तो आई कांट से कि वो एक ही है, पर ऐसा 1-2 बार हुआ है कि हमें लगा कि वाओ, लाइक वहां से कैसे लोग हमें दे आर ऑर्डरिंग फ्रॉम अस. इट्स थोड़ा ऐसे अनबिलीवेबल लगता है. रीच काफी मतलब दिख रहा है, इससे पता चल रहा है. सोशल मीडिया डज वंडर्स, आई फील. तो आप जैसे बताया थे कि आपने जो एग्जांपल दिया था एग्जीबिशन वाला कि एकदम ओवरनाइट आपको प्रिपेयर करने पड़े थे ऑर्डर्स वगैरह, अभी तो उसके बाद काफी जर्नी आगे बढ़ चुकी है. तो करंटली आप अपना इन्वेंटरी कैसे मैनेज करते हो? लाइक एक चीज होता है कि क्या ट्रेंडिंग है या फिर क्या डिमांड में है वर्सेस कुछ नए आइडियाज आपको ट्राई करने होंगे, और कितना इन्वेंटरी रेडी रखना है और कितना ऑन डिमांड फिर बाद में बनाना है, तो वो आप कैसे बैलेंस करते हो? मैनेज द इन्वेंटरी इज द बिगेस्ट चैलेंज दैट वी हैव इन आवर बिजनेस. क्योंकि क्या होता है, जैसे मेरे पास यहाँ पे मेरा स्टूडियो है, तो आई हैव प्रोडक्ट्स दैट आर डिस्प्लेड इन द स्टूडियो. नाउ फॉर द स्टूडियो आई हैव अ सेपरेट warehouse and then I have a big warehouse which is in Ahmedabad itself. मेरा स्टॉक अलग से वहाँ रहता है. Now I also have my presence on other e-commerce websites. We are there on Ajio, LB, BSA, different websites. तो उसके ऊपर भी मुझे virtual inventory तो उनके पास होती है, physical मेरे पास होती है. And then we also have people based outside India. We take our products on consignment basis and sell it in their countries, in their respective countries. So inventory was a very big problem for us. So software called Unicommerce that we use. That's basically a holistic inventory model where आपका product कहीं से भी sell हो रहा है. It basically marks -1, -2, -10 on a holistic level. Live basis. हाँ. So no matter where if my products are listed on Nykaa, then I can वहाँ पे अगर products sell होगी तो मेरा यहाँ पे inventory में वो minus हो ही जाएगा. The other question that you had is how we manage कि हमें कितना inventory किसने बनाना है. Like if I'm launching a collection which is, let's say for example totes, तो उसमें अगर मैं 5 colors बना रही हूँ तो I have to at least make 50 to 100 pieces in one color to justify that launch. Right.
right? Because अगर मैं अलग अलग platforms पे वो sell करना चाहती हूँ and if I only have 10 pieces, it's not going to justify. Once that product gains a little bit of growth and it has gained its own pace, that's when we realize कि ठीक है, हम लोगों ने totes में अगर 6 designs launch किए हैं, उसमें से 3 काफी अच्छी चल रही है, तो उसका हम लोग multiple में production निकालते हैं. That is about the new launches. And there are products that are regular products, online favorites, offline favorites, everywhere favorites, जो हम लोगों ने start किया था 2018 में जिस bag से, वो even today they are our best sellers. तो वो हमारा बल्क में बनता ही रहता है. आई डोंट वेट फॉर देम टू गो आउट ऑफ स्टॉक, ओके, बिकॉज सी देयर इज अ रूल. आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं जब आप वेबसाइट पे हो, इफ योर प्रोडक्ट गोज आउट ऑफ स्टॉक, यू आर मिसिंग ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स. इफ इट्स अ बेस्ट, शुड नॉट गो आउट ऑफ स्टॉक. दैट्स वन आइडियल वी बीन फॉलोइंग एंड वी आर वर्किंग ऑन इट. वी आर डेवलपिंग इन अ वे कि हम लोग उस चीज को रिप्लेनिश फटाफट से कर पाए. सो हमारी रेगुलर प्रोडक्ट्स हैं जो वी नो दैट देयर इज अ कांस्टेंट डिमांड, उसका हम लोग हमेशा से स्टॉक रखते हैं. वी हैव अ रिजर्व एज वेल. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव मेड in a particular design like black hashtag 3 pocket is also one of our best sellers. तो उसमें अगर मैंने अभी 150-200 pieces का ऑर्डर दिया है, before that reaches 30-40 pieces, मेरा next lot of production would have started. So I wouldn't wait for that bag to go out of stock. Of course, there are times when it goes out of stock, but we try and maintain that cycle. तो जैसे आपने बताया कि आप अलग अलग मार्केट प्लेसेस पे भी अवेलेबल है आपका ब्रांड एज कंपेयर टू योर ओन वेबसाइट. तो बहुत वैसे अलग पर्सनल टाइप की चीज है कि आपके खुद के वेबसाइट पे जब ऑर्डर आता है वर्सेस कहीं और से मार्केट प्लेस से ऑर्डर आता है, वो एक साइकोलॉजिकली लगता है कि मेरी वेबसाइट पे ऑर्डर है वर्सेस कहीं और से आया है, या फिर लगता है कि ऑर्डर तो ऑर्डर होता है कहीं से भी है? मेरे को बहुत ऐसा है, टू बी ऑनेस्ट. आई एम एक्सट्रीमली सेंसिटिव टुवर्ड्स Maisha. See, my website is going to reach a few thousand people, whereas when I talk about bigger e-commerce platforms, they're going to reach masses. And you also know that e-commerce platforms like the big ones, they charge hefty commissions when they list your products. But सामने they're also giving you a lot of publicity, I would say. Like, your brand is becoming popular because people are listening to the name. They have a recollect value that, okay, I saw Maisha here. So I think that kind of builds a lot for the brand positioning. I wouldn't say कि मेरा if I had to put it in a way where I had to say कि मैं इसमें से क्या earn कर रही हूँ, monetarily, I would say that honestly I might not be making a lot compared to what I would be making when I sell it on my website, but I'm getting a lot in terms of the brand publicity is concerned. एक क्वेश्चन आया था अभी लाइव में ही नीचे, किसी ने पूछा है कि वेबसाइट बना ली तो उसको प्रमोट कैसे करना. मैंने आपको बताया हमारा बेस हमेशा से इंस्टाग्राम रहा है, बिकॉज आवर जर्नी स्टार्टेड विद इंस्टाग्राम. एज फार एज आई थिंक द कम्युनिटी इज वेरी क्लोज नेट. ठीक है, मतलब they are just not here for the brand, but there's much more to Maisha than just bags and just a brand. So हम लोग क्या करते हैं, in order to drive traffic to our website, Instagram is our base. Whoever interacts with our Instagram, we divert that traffic to our website via Facebook ads. So the question that person had asked, मुझे ऐसा लगता है कि I hope I understood that correctly. That yeah, it was that only. I think you have to start with marketing, and if you ask what do we do about marketing, we are basically into Facebook ads. We also do a lot of PR activity, but that will be some percentage of our marketing strategies. तो जैसे वेबसाइट की बात हो गई थी मार्केटिंग की, how helpful is the website to sell your product, or how convenient it is to run your business? Honestly, it's the most convenient way to sell your products. कोई भी business है, once it starts growing, okay? अगर Instagram से आप business कर रहे हैं, once it starts growing, you'll get flooded with DMs. Now, physically, even for 3 people in a team, it is very difficult to get back to each and every person who has replied. I would say even if that person is a prospective customer, ठीक है, अगर आप रिप्लाई नहीं कर पा रहे, then you're losing on business. Right. Whereas on the website, what is happening is people are coming there at their own time convenience. ठीक है, they are placing everything is automated. So your human interference is quite less. Whereas when you're doing it by yourself physically, even if it is online, but you're missing on a lot of business, I would say. नहीं, तो ये बात एकदम सही बोली आपने कि DM to order में तो आप ह्यूमनली जितना पॉसिबल है उतना ही ऑर्डर्स ले सकते हैं,
या फिर टीम बिठानी पड़ेगी जो चीज है। वेबसाइट में तो आई थिंक जो भी ऑर्डर ले लेता है, आप रजिस्टर, एक बार ऑर्डर रजिस्टर हो जाता है, फिर वो आप पे है कि आप कैसे उसको प्रोसेस करते हो। इंस्टाग्राम तो सिर्फ एक एग्जांपल है, व्हाट्सएप से भी अगर ऑर्डर ले रहे हैं, मैंने आपको मैसेज किया कि मेरे को ये बैग चाहिए, अगर आप मुझे उसी के 10-15 मिनट में रिप्लाई नहीं करते हो, आई माइट लूज इंटरेस्ट, आई माइट गेट बिजी समवेयर एल्स, आई माइट गो आउट फॉर समथिंग एंड देन यू हैव लॉस्ट मी एज अ कस्टमर। आई माइट कम बैक व्हेनेवर आई फील लाइक, बट वैसे सो मुझे लगता है काफी सारे डायनामिक्स होते हैं व्हेन डूइंग इट जस्ट ऑफलाइन। दैट्स इंटरेस्टिंग। तो फिर जैसे आपने बताया कि इंस्टाग्राम एड वेड रन किया, बिजनेस आगे बढ़ गया, अभी आपको क्या लगता है, लाइक कुछ सोच के रखा है विजन की ये प्रोडक्ट्स इनकॉर्पोरेट करने हैं या फिर ये नए सेगमेंट में एंटर करना है? तो लाइक व्हाट्स द विजन बिहाइंड इट एंड वेयर डू यू सी मायशा ग्रोइंग? So our next target is to go international. Right now we do ship globally, but हमारी website is not live yet, and we'll be going live with the website anytime now. So it's going to be an international website. So that is one target that we have, and the other target is we want Maisha physically present at different countries. जहाँ पे there are would like to keep our products. So we are working on that now. आई विश कि जल्दी हो जाए एकदम। तो यार थैंक यू। तो अगर आज की डेट में कोई ई कॉमर्स में घुसना चाह रहा है, आपके एक्सपीरियंस से वो क्या की डूज एंड डोंट्स, आप, मैं कोई नंबर नहीं देना चाहता, इट्स नॉट अ लिस्टिकल फॉर्मेट, बट जो आपके दिमाग में फर्स्ट थॉट्स आते कि ये तो पक्का करना और ये तो बिल्कुल नहीं करना, वो क्या चीजें होगी? सो कुछ चीजें तो डेफिनेटली ध्यान में रखनी चाहिए। नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन the quality that you're giving to your customers, ठीक है? आप थोड़ा study कर लो, do a lot of trial runs, ठीक है? What we usually do is, even today what we do is, before I launch a collection, I start using that bag. I will use it. Okay. Somebody from my team will use it, ठीक है? We use it and we want to see कि इसमें in order to increase the comfort or in order to increase the user friendliness of the product, what better can we give the customers? So ये एक चीज है जो हम लोग आज भी practice करते हैं। I'm not saying कि आप जब start करोगे तो of course you are learning, so things are going to be different from where you might start and where you might end up being, but your priority should always be never compromise in the quality that you're giving. Okay, the second priority for us has always been customer satisfaction. Even today, like, we have a no questions asked written policy. Let's say for example, if there's a manufacturing defect, we get it repaired for you. No matter when you come to us, we'll get it repaired for you and we'll to you. That is something that we've always focused on, and we've always had a very even on the DMs, like with the DMs that we receive, we try to keep it very personal. So you're definitely building a business, but also remember that you're building a community. Okay, that community is going to be your guiding force when you start growing. So this is definitely there. Don't shy away from criticism. Like, you should always welcome that. I think that's going to be your biggest I would say that's going to take you places. Like, people who criticize you and your products or anything, you should take more of that. Be open to feedbacks. Yeah, so I think that's about it. So thank you Isha for such a wonderful session. आपने टाइम निकाल के इतने सारे valuable insights दिए, अपनी personal stories share की. I'm really happy that we did this, and I hope that इससे काफी सारे लोग inspire होंगे and they might want to come up with something of their own. ऐसी और इंस्पायरिंग स्टोरीज जानने के लिए और अपना बिजनेस नॉलेज बढ़ाने के लिए दुकान को जरूर फॉलो करें।